Now, this is redox reaction and it is exercise question number. Here we can say that 8.4. 8.4 क्या दिया है? Fluorine react with ice and result in the formation of change H2O solid से लेके fluorine and HF and HOF. To justify that this reaction is redox reaction, we have to justify that this reaction is, again we can say that redox reaction. Clear? फिर और भी क्या बताना है? Now, if oxygen of HOF disproportionate at room temperature, then what reaction is possible? यहाँ ऐसे दो क्वेश्चन पूछे हैं. देखो, disproportionation मतलब क्या होता है? तो whenever we are going left to right and for same atom more than two different type of oxidation state will come, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Here disproportionation reaction. Clear? अगर यहाँ पे आपको redox reaction भी बताना है, तो redox reaction मतलब whenever any chemical reaction is given and you are interested to find out कि whether it is redox or not, तो आपको क्या करने का? सबसे पहले उसके अंदर क्या कर देना है? कैलकुलेट हियर मींस ऑक्सीडेशन नंबर. कैलकुलेट हियर मींस ऑक्सीडेशन नंबर. फिर देखने का कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट कि गिवन रिएक्शन इज अगेन मींस रेडॉक्स और नॉट. तो चलो यहाँ पे देखो, सी इन द गिवन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन चेंजेस 0 to -1. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0. तो why it is 0? Because it is element. और यहाँ पे देखो -1, तो हाइड्रोजन +1 and fluorine is again we can say it -1. In HF and HOF, whereas oxidation number of oxygen changes from -2 water to 0 in HOF. Thus F2 is reduced. देखो यहाँ 0 से क्या हो रहा है? -1 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है ना? F2 is reduced. Clear? Whereas oxygen is oxidized. तो why it is oxidized? Because -2 से यहाँ पे क्या हो रहा है? 0. मतलब ये increase हो रहा है. Clear हुआ? तो whenever oxidation number will decreases, the type of reaction is reduction. But whenever oxidation number will increases, the type of reaction is again we can say that oxidation. Clear? अब देखो HOF here. HOF is highly unstable molecule and hence decomposed to form O2 as well as we can say that HF. अब इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो HOF का, H+1 F-1 and O2 will be 0. Now if oxygen of HOF disproportionate, then in disproportionation reaction oxygen must have three different oxidation state. In simple word, the oxidation state of oxygen in one of the three products should be lower than we can say that oxygen in HOF, whereas in other product it should be higher. The oxidation state of oxygen is 0 in HOF. Clear हुआ कि नहीं? Hence we can say that it decreases its oxidation state -2 if HOF gets reduced to water, and also it can be increased its oxidation state to +2 if HOF gets oxidized to OF2. Therefore possible reaction is this one. क्या है? देखो H की वैल्यू +1, O है ना, और ये आपका -1, तो यहाँ पे 0 आएगा. Here H is +1, oxygen is -2. इधर आपका देखो oxygen is again is +2 and fluorine is -1. मतलब कभी कोई भी रिएक्शन दिया है. Clear? तो whenever we can say that if any reaction will be given, तो how we can find out कि given reaction is redox or not? तो आपको चेक करने का कि नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कि नहीं. And if more than two different type of oxidation state will come for same atom, then it will represent disproportionation reaction. ठीक है? तो ये रेडॉक्स भी है और डिस्प्रपोर्शनेट भी है. बराबर? क्लियर हुआ कि नहीं? तो रेडॉक्स मतलब क्या होगा? रेडॉक्स का मतलब
here number, oxidation number will increase as well as we can say that decreases. Clear? Now this is redox reaction, chapter number 8, and here we can say that we will discuss oxidation number. But now we have to calculate oxidation number of sulfur, chromium, nitrogen in H2SO5, dichromate nitrate ion, and suggest structure of this compound and count the fallacy also. Clear? ये क्वेश्चन है, मतलब आपको इस कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5, यहाँ लिखा 2H प्लस सल्फर 5O0. अब सल्फर इज नॉन मेटल एंड हियर देयरफॉर हाइड्रोजन इज टेकन एज अ +1. तो 2 ये 1 आया, सल्फर ऑक्सीजन का चार्ज -2. तो सॉल्व करेंगे तो S इज इक्वल टू 8, बट S इज इक्वल टू 8 इज नॉट पॉसिबल. S इज इक्वल टू 8 इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? Z इज 16. तो या तो या -2 आता है या +6 आता है. क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको सिखाया हुआ है. ठीक है? देयरफॉर दिस fallacy is overcome by calculating oxidation number of sulfur by chemical bonding. और केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है. इधर पे हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, -2, and here hydrogen is +1. But here between two oxygen, peroxide bond is there. Here we can say that peroxide bond is there. Therefore here we are taking -1. इधर क्या हम लोग ने सभी ऑक्सीजन को ऑक्साइड ले लिया था, जो कि रॉन्ग हो गया. क्लियर? तो चलो पेरोक्साइड है इसलिए 2. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, देन 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, देन सल्फर एंड देन 2 ऑक्सीजन, -1. मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो. हियर ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर of sulfur is again we can say that +6 will come. Now this 6 number correlate with this oxidation number of sulfur. Clear? तो आपको जब भी how we can find out कि oxidation number is again means right or wrong. तो first of all identify in your given compound hydrogen and oxygen is present or not. यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है. क्लियर हुआ कि नहीं? Because in case of oxygen, 3 different type of oxidation state will come. -1 होता है तो peroxide, -2 होता है तो oxide, and -1/2 होता है तो here we can say that superoxide will be there. In this way, आप जब chemical bonding method apply करोगे, here this oxidation number of sulfur is 6 is there. Clear? Now we will discuss or calculate here oxidation number of chromium. चलो CrO5 है, यहाँ पे Cr प्लस 5O इज इक्वल टू 0. अब ये ऑक्सीजन -2, फिर से Cr10 आ गया. बट हियर 10 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम 10 इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज सी यू नो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, व्हेनेवर वी आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो देखो क्रोमियम है, Z इज इक्वल टू 24 इज देयर. So this is argon, 4s1 and 3d5 will be there. Therefore in case of chromium, maximum number of electron, how many electron it can donate? So here means 6. Therefore see, more than 6 it is not possible. Therefore here now we will calculate oxidation number of chromium with the help of another method. उसको बोलते हैं chemical bonding method. So this fallacy can be recovered or removed by calculating oxidation number of chromium with the help of chemical bonding method. तो first of all structure draw करो, Lewis dot structure. Here this oxygen, 4 oxygen is related with respect to -1, इसको peroxide बोलते हैं, और ये -2 है तो ऑक्साइड है. Now Cr, how many oxygen? 4 oxygen, 1 2 3 4, -1 solve करोगे तो Cr is equal to 6. So this 6 number is related with respect to
oxidation number in case of electronic configuration. Now we will calculate here means oxidation number of nitrogen in NO3. ये N आया प्लस 3O इज इक्वल टू -1. तो ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, वैलेंसी क्या है, -2. यहाँ पे N इज इक्वल टू 5 विल कम. अब चलो नाइट्रोजन है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू 7, 1H2, 2H2, 2P3. In case of nitrogen either -3 और +5 will come. तो देखो +5 है, ये तो आ ही रहा है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे केमिकल बॉन्डिंग मेथड से. देखो -2 ये -2 -1 सॉल्व किया तो n is equal to 5 will come. मतलब whenever we are calculating oxidation number of nitrogen from both method, here we can say that same answer will come. मतलब आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन फ्रॉम बोथ मेथड इट विल ऑलवेज रिमेन सेम. दैट्स सच, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कि नहीं. तो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम, नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड. ठीक है, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 8.6. नाउ वी हैव टू राइट डाउन फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग कंपाउंड. आपको फॉर्मूला लिखना है. क्लियर. देखो मर्क्यूरी, सिंबल ऑफ मर्क्यूरी इज Hg, Cl का ये हो गया. तो इधर पे देखो मर्क्यूरी क्लोराइड, दिस इज क्वेश्चन. तो आंसर क्या होगा, Hg रोमन लेटर में 2 एंड देन आफ्टर Cl2 विल बी देयर. क्लियर. तो दिस इज क्वेश्चन, दिस वन इज आंसर. नाउ निकल, इन केस ऑफ निकल वी आर यूजिंग Ni. सल्फेट, तो सल्फेट मतलब SO4-2. तो निकल लेना है, रोमन लेटर में 2 लेना है, SO4 विल बी देयर. सिमिलरली टीन, तो टीन मतलब Sn होता है, SN4 O2 विल बी देयर. क्लियर. सिमिलरली थेरियम, तो हियर वी आर राइटिंग TH. सल्फेट मतलब SO4-2, तो TH2 SO4 विल बी देयर. क्लियर. Iron 3 sulfate, in case of iron here Fe, sulfate मतलब SO4-2 will be there. ये Fe2 3 है, SO4 thrice is there. Similarly chromium 3 oxide, तो Cr2 and then after O3 will be there. ये जो black line में लिखा है ना, so this is your formula. So on the basis of this formula we are writing here means notation. Clear हुआ. And see, whenever we are writing this notation in Roman number, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो this is normally known as stock notation. This one is nothing but it is normally known as stock notation. So what is stock notation? So whenever we are writing number with Roman one, whenever we are writing oxidation state with the help of Roman number, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, stock notation. करेक्ट. आपको यहाँ पे सिंबल आना चाहिए, सबकी वैलेंसी आनी चाहिए, इस हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं. ठीक है कि नहीं. चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सजेस्ट अ लिस्ट. क्लियर. सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस वेयर C कार्बन कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट -4 to +4 and nitrogen can exhibit oxidation state -3 से लेके +5. Clear. Here oxidation state of carbon is -4 to +4 and oxidation state of nitrogen is again we can say that -3 and then -3 to +5 is there. तब यहाँ पे क्या करना है, सी. चलो अभी मैं आपको बोलूँ, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, ये जो नंबर है नंबर, तो दिस विल रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो -4 है. क्लियर. तब देखो -4 पे CH4 is possible, but here in case of ammonia it is not possible. जैसे यहाँ पे मैंने लिया CH4, तो this is CH4 C4H0. Now carbon is non-metal, तो हाइड्रोजन को क्या लेना है, 1 लेना है. Here C is equal to -4 will come. In this way oxidation state of CH4 is again we can say that -4 is there. Clear. अब देखो now in case of -3, तो -3 आपका दोनों में पॉसिबल है ना. तो -3 किसमें आएगा,
CH3 and then after we can say that CH3. Similarly here in case of -2 तो CH3Cl NH2 NH2 इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, -1 तो here C2H4 Cl2 और CH will be there. उसके बाद देखो यहाँ पे 0 इन केस ऑफ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन, फिर +1 तो +1 के केस में कार्बन इज नॉट पॉसिबल बट इन केस ऑफ N2O +1 will be there. In case of +2 example is CHCl3 +3 here C2Cl6 and 2O3 is there, and then after +4 in case of +4 here CCl4 and N2O4 will be there. In case of +5 तो कार्बन में it is not possible but in case of nitrogen N2O5 will be there. Clear? आप कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, जैसे मैंने ये लिया here N2O5 twice N5O0 तो 2N 5 -2 will be 0 तो 2N ये 10 है तो N is equal to 10/2 तो 5 here means 5 oxidation state will come. Correct? 5 number of oxidation state will come here. ऐसे आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? जैसे मैंने आपको क्या बोला here first of all write down oxidation number and then after calculate it. Clear? जैसे चलो अभी यहाँ पे CH2Cl2 है, CH2Cl2 तो C2H 2Cl 0 तो कार्बन नॉन मेटल है इसलिए ये आया. अब ये माइनस here we can say C+2 -2 तो C is equal to 0. Here oxidation state of CH2Cl2 will be again we can say that 0. Here we can say that oxidation state of means carbon will be again we can say that 0. अगर N3 है here this is N3 और इसी को आप N2 लिखते हो तो यही आपका एलिमेंट है ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन in elemental condition so this will be again we can say that here means 0 will come. समझ में आया? तो आप है ना ऐसे देखो this is oxidation state, different oxidation state and here compounds of carbon. Here first of all we are taking compounds of carbon. This is compound of carbon and this one is again we can say that compound of nitrogen will be there. आपको बस एक चीज याद रखना है here sign of H may be either positive one or negative, so this is directly associated with respect to species with which it is attached. यदि नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन को प्लस लेने का, मेटल है तो हाइड्रोजन को माइनस लेने का. करेक्ट? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8.7. ठीक है, आपको 8.7 में ऑक्सीडेशन स्टेट आप दूसरा कोई भी कंपाउंड ले सकते हो. अब देखो इफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1 देन इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब +1 एंड +5 इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कार्बन, while in case of nitrogen -4 is not possible. तो ये याद रखना है. ठीक है? Now in question number 8.8 here reason is given. और रीजन में क्या पूछ रहा है? See, while SO2 and H2O2 can act as oxidizing as well as reducing agent in their reaction, and ozone and nitric acid act as oxidant. Why? You have to find out here this reason. Clear? तो चल अभी oxidizing and reducing मतलब here number will increase or decrease, then this type of property will come. तो चल यहाँ पे क्या लेने का? Any substance can act as an oxidizing or reducing agent if one of the element in the given compound is present in its intermediate oxidation state. Which one? Intermediate oxidation state. Thus, during the reaction, it can either increase its oxidation number, means reducing agent. यदि क्या होगा? During the reaction, it can either increase its oxidation number, so this is normally known as reducing agent,
और डिक्रीज तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब whenever number will increases it is reducing agent and decreases so this is we can say that oxidizing agent. Clear? So this is basic information related with respect to oxidizing as well as reducing one. Now we will apply this theory in SO2. So in SO2 oxidation number of sulfur is 4. In here we can say that SO2 this is SO2 तो sulfur 2 oxygen 0 तो sulfur -2 तो sulfur is equal to 4. Oxidation number of sulfur is equal to +4. In principle sulfur can have a minimum oxidation state -2 and maximum +6. इसका मतलब electronic configuration. So with the help of electronic configuration in case of sulfur here oxidation number is either -2 or 6. So therefore S in SO2 can either decrease or increase its oxidation number and hence can act both as an oxidizing as well as reducing agent. Clear? In SO2 oxidation number will be 4, but in case of sulfur with the help of electronic configuration here minimum oxidation number is -2 and maximum oxidation number is again we can say that +6. Clear? इसका मतलब यहाँ पे आया 4 तो 4 को यदि मैं 6 की तरफ लेके जाऊं तो इंक्रीज करना है, -2 की तरफ लेके जाओ तो डिक्रीज करना है. In this way we can say that SO2 nature of SO2 may be either we can say that oxidizing as well as we can say that reducing one. Correct? So this is complete information in case of SO2. Now we will apply concept of oxidizing and reducing agent in H2O2. The H2O2 is nothing but it is peroxide. In H2O2 oxidation number of oxygen is -1. Clear? But in principle oxygen can have minimum oxidation number is -2 and maximum oxidation number is again we can say that 0. Clear? जैसे मैंने SO2 में बताया ना same way hydrogen peroxide in case of C higher hydrogen peroxide. तो चलो यहाँ क्या लिया मैंने this is H2O2 here HOH so this is peroxide bond so this one is peroxide bond therefore oxygen is -1 but with the help of electronic configuration here means 0 and then after we can say -2 will come with the help of electronic configuration. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2 मिनिमम and 0 is maximum. And whenever we are comparing oxidation state of oxygen from 0 as well as -2 their number may be either increase or decrease. So whatever thing will come in case of SO2 same thing will be repeated in H2O2. Again we can say that H2O2 will behave as a we can say that oxidizing or reducing agent. Correct? So this is SO2 and H2O2. Finally, it is oxidizing and reducing one. मतलब in case of SO2 and H2O2, both things are possible. Clear? Now we will discuss in case of ozone. In case of ozone, the oxidation number of oxygen is 0. It can only decrease its oxidation number from 0 to -1 and -2. Clear? But cannot increase to +2. Clear? Again I am repeating. O3 is molecule. The oxidation number of oxygen is 0. Now it can only decrease its oxidation number from 0 to -1 or -2, but cannot increase to +2. Therefore O3 act only as oxidant. So this will behave just like as we can say that oxidant only. Clear? अब आता है HNO3. Now in HNO3 so nitrogen atom. So again we will calculate here oxidation number of nitrogen atom. Clear? Oxidation number of nitrogen atom. तो यहाँ क्या आ जाएगा? This is HNO3. Here H and 3O is equal to 0. Here 1 and 3 minus 2 is equal to 0. तो
nitrogen will be 5. Clear? अब देखो, now nitrogen atom is in maximum oxidation state plus 5. Therefore, it can only decrease its oxidation number and hence can act as a oxidant only. Clear? So on the basis of this thing, we can say one thing is very common. कि first of all, calculate oxidation number in given compound, and after calculation, compare that oxidation number with the help of electronic conjugation. यदि उससे increase या decrease होता है, your material will behave as a oxidant as well as here means reductant one. Clear? So this is complete information to determine that given material is oxidant as well as reductant one.